ब्लॉग। अभी सुबह सुबह उठा हूँ तो ज्यादा एनर्जी मत एक्सपेक्ट करना। अभी आपको बता देता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। बोल ऑफ प्रोटीन ओट्स, सो 85 ग्राम ओट्स हैं एंड सम वॉलनट्स ऑन टॉप ऑफ इट, वेरी सिंपल। इसके साथ मैं कई बार एक एप्पल भी ऐड कर लेता हूँ, पर अभी एप्पल था नहीं। ब्लैक कॉफी एंड मल्टीविटामिन का एक एफर्वेसेंट सप्लीमेंट था जो फ्री मिल गया था मुझे, सो आई वाज लाइक या व्हाई नॉट यूज इट। और गाइस इस व्लॉग में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्रोस के अलावा कुछ बात करूं। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि what is the psyche behind my kind of eating. Like I don't really like to track, and I use mindful eating as a healthy tool, and this gives me like diverse options ताकि मैं कहीं भी हूँ तो I know कि okay this is the kind of food I need to eat so that I can obviously achieve my fitness goals. Okay guys, so now I'm gonna be just staying out in daylight for around 30 minutes or 40 minutes. I'm gonna do some basic meditation and I'm gonna read a book, and meanwhile you can see my mom doing some yoga. So guys, time हो रहा है अभी 1:23 PM and time for my second meal. Before I show you what exactly am I having, I want you to understand कि अभी मेरा hunger state क्या है. And as of now, I will ask myself on a scale of 1 to 10, how hungry I really am. 10 is hangry and 1 is not even like a single bite can be consumed. So abhi I am around a 6, which is relatively fine for the type of meal I'm having. Okay guys, so this is meal number 2. 2 toasted bread slices. Pretty simple, मतलब मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है. Yes, I'm a weirdo. And then I have probiotic दही. So क्या होता है, लोगों को लगता है कि they need to consume yogurt. Yeah, they can. Definitely they can. However, अगर आप ये देखोगे, macros are pretty much the same. Yes, fermentation process is a little different, but at the same time अगर आपको yogurt नहीं मिल रही या फिर आपको लगता है कि yogurt बहुत expensive है आपके लिए, feasible नहीं है, so you can definitely try this out. Guys, so here we have our mixed दाल. So इसमें I think अरहर की दाल है और चने की दाल है, and ये है थोड़ा सा राइस जिसमें कुछ गिर रहा है. So थोड़ा messy हो गया आज किचन because apparently RO ख़राब हो गया है. तो आप देख रहे होगे कि ये साइड एकदम साफ, बट ये साइड थोड़ी सी गंदी है. एनीवे, तो दाल, राइस along with some curd, and if I ask myself right now on a scale of 1 to 10, I'm around a 6 again on a hunger basis. So guys, अभी मैं खाऊंगा और साथ में I'll just watch something on YouTube, maybe like a car vlog, something like that. I'm watching Faisal Khan's video these days, so Faisal Khan's video about obviously cars, motor beam वगैरह. So that's something which I like, and this is usually my time when I watch something which I like. 20-30 minutes. I take my time when I'm eating. I'm anyway a very slow eater, so try to make use of this time. Okay guys, so this is my pre-workout meal. Now this is a shake of 1 banana, 300 ml milk, skim milk, 1.5 scoops whey protein, 1 scoop essential amino acids. This is magnesium. Magnesium promotes skeletal muscle relaxation. Now this is a very weird looking thing, एक करेले का जूस, और इसमें पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, सेल का न्यूक्लियस पता नहीं. Now this is vitamin C plus 5 grams collagen and apple cider vinegar 2 teaspoons, and this is raisins and walnuts. Almonds खत्म हो गए थे तो I was like okay, walnuts ले लेते हैं. And after this we'll be kicking legs. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna
Okay guys, so for the squat, me and Coach Koku have been specifically working on the depth, which comes through your ankle and the hip mobility. तो कुछ लोगों को होता है ना, नी पेन होते रहता है. That is primarily, I say primarily, तो ध्यान से सुनिएगा, primarily because of the dysfunction of the gluteus medius, which is your abductor muscle, and the ankle mobility. So इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा डेप्थ इंप्रूव होगा, पूरा स्क्वाटिंग मोबिलिटी भी इंप्रूव होगा, एंड दैट्स व्हाट आई बीन वर्किंग ऑन. एंड इफ़ यू सी माई वीडियोज़ फॉर द प्रेप सेट, यू माइट बी सीइंग कि यू नो द डेप्थ इज़ अ बिग इशू, बट मैं साइड में यहाँ पे पुराना फॉर्म डालूंगा, आप वो देखना और अभी वाला देखना. इज मैसिव इम्प्रूवमेंट एंड it's always a work in progress. So back to the workout. Alright guys, so done with my workout. Now it's time for the post-workout Amrit. Now many people think that post-workout protein shake is like the key because anabolic window होता है, ये होता है, वो होता है. No, it's not really true. Anabolic window बहुत बड़ा होता है, and all you need to make sure is that you're hitting your daily protein intake on a consistent basis. मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने ले लिया 150 ग्राम्स अगर आपकी बॉडी मांगती है और उसके बाद आपने कुछ लिया ही नहीं. No, it's not like that. It's all about doing this on a consistent basis. Now इसमें क्या क्या है? 5 grams collagen, 5 grams creatine, 40 grams glucon D, और क्या है? और क्या है? व्लॉग चल रहा है, जल्दी सोच. 6 hours later. हाँ, two scoops essential amino acids. अभी बज रहे हैं 8:30. मैं एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा, कैरोसेल पोस्ट है, देखना ज़रूर. यहाँ पे डाल दूंगा मैं साइड में ताकि आपको एक ग्लिम्स मिल जाए एकदम से. एंड 9:30 के आसपास डिनर करेंगे, उसके बाद आई माइट गो आउट फॉर अ ड्राइव टुडे. सो लेट्स सी. ओके गाइस, सो नाउ वी आर मेकिंग पनीर की सब्जी. वेरी सिंपल रेसिपी, कुछ खास नहीं है इसमें. कैप्सिकम, स्पिनच, टोमेटोज, अनियन, गार्लिक एंड ऑब्वियसली पनीर एंड सम like just one green chili. All you have to do is mix all of these things in a pan, which is very dirty right now, and that's about it. Okay guys, so final meal of the day is 200 grams पनीर. मैं इसे हटा देता हूँ. हाँ, 200 grams पनीर, zinc, 1 दही, some walnuts and fish oil भी है, but वो उधर पड़ा है. Guys, इसके बाद I'll go for a drive. It's been long since I've just been out on a drive और गाड़ी वाड़ी भी काफ़ी टाइम से चली नहीं थी, तो I was like गाड़ी ना खराब हो जाए तो इसको चलाते रहते. Okay guys, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा बाहर निकलते हैं. काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब बाहर वार का चक्कर तो ऐसे आजकल लग नहीं रहा है. So I was like, let's go outside, let's go for a drive. This is the time when I usually listen to some audiobooks. However, today I was like, यार नहीं, थोड़ा let's just chill around. ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलेगा, बट इतना ट्रैफिक है कि मतलब साइड में मैंने गाड़ी रोकी हुई और भूम 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 करके गाड़ी जा रही है. सो वन फिटनेस टिप फॉर यू व्हाइल यू आर ड्राइविंग इज द सीटिंग पोस्चर. सो आपने देखा होगा काफी लोग एकदम पीछे होकर गाड़ी चलाते हैं एकदम स्टर्ट बन के, लेकिन वो नहीं करना है. हमें एक ऐसे डिस्टेंस पे गाड़ी सीट रखनी है जहाँ पे आवर बैक इज रिलेटिवली स्ट्रेट. Like you don't have to reach out for the steering wheel, and this will take care of majority of your backache problems, especially if you're someone who's driving for prolonged hours. So just try this out next time you drive, and I've made a dedicated video कि आप गाड़ी में भी कैसे exercise कर सकते हैं doing some simple isometrics. So check out that video here. इधर कहीं आ जाएगा वो. Alright guys, so अब दिन में कुछ बचा ही नहीं करने को, so इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. I hope you liked it, and at the end of the day, I just want to say I didn't track, I didn't play around with the numbers that much. However, I've done this in the past, and that's why I am a little like relaxed when it comes to this particular aspect of nutrition. If you haven't ever tracked your food
my friend Siddhant has made a very good video which you all should watch, which will help you with the like A to Z of tracking. So do check it out around somewhere around here. And if you like this video, guys, you know what to do. Give it the thumbs up button. Like दे दो उसको ऐसे कि मतलब बस तोड़ दो. And subscribe to the channel, guys, if you want to see future videos. Thank you so much for tuning in. Chaitanya Bhutani signing out. Peace.